प्रीवियस वीडियो रे हम डिस्कस करथिले dy dx of cos x is equal to minus sin x। अब देखिए प्रूफ dy dx of tan x is equal to sec square x। हमको फर्स्ट प्रिंसिपल रे प्रूफ करियर अछि। फर्स्ट प्रिंसिपल होचे dy by dx is equal to limit delta x tends to 0 delta y by delta x। तो हमको दिया जाए y is equal to tan x, तो y plus delta y is equal to tan x plus delta x, that implies delta y is equal to tan x plus delta x minus tan x minus y is equal to tan x, तो y जगह हमें tan x पुट करियो, तो delta y is equal to tan x plus delta x minus tan x। तो tan x जोड़ते हो हमें डायरेक्टली tan थीटा को sin थीटा by cos थीटा कर परियो, that implies delta y is equal to sin थीटा बदला रेट कौन छ x plus delta x, तो sin x plus delta x divided by cos x plus delta x minus sin x by cos x। तब सबट्रैक्ट कर ले एलसीएम बाहर करके सबट्रैक्ट कर ले का डेल्टा y is equal to sin x plus delta x into cos x। तो एलसीएम बाहर कर ले क्रॉस मल्टीप्लाई हला बेले हेजिवो माइनस cos x plus delta x into sin x whole divided by cos x plus delta x into cos x। तो sin a cos b minus cos a sin b is equal to sin a minus b। तो sin a minus b रो फॉर्मूला होचे sin a minus b is equal to sin a cos b minus cos a sin b। तो ये फॉर्मूला मैं यूज करेंगे sin a cos b minus cos a sin b जगह sin a minus b नहीं परिवा delta y is equal to sin a minus b। तो sin a minus b होचे a होचे x plus delta x, b होचे x, तो x plus delta x minus x divided by cos x plus delta x into cos x। तो हमको बाहर करियर अछि लिमिट delta y by delta x, लिमिट delta x tends to 0 delta y by delta x। तो delta x बोथ साइड रे डिवाइड कर दो एवं लिमिट यूज करिया, तो लिमिट delta x tends to 0 delta y by delta x is equal to limit delta x tends to 0 sin x plus delta x minus x, तो x कैंसिल हो जाओ केवल रहे sin delta x, तो sin delta x divided by delta x divided by delta x into 1 by
cos x plus delta x into cos x. तो एठारे भी डेल्टा एक्स अच्छे, एठारे भी डेल्टा एक्स अच्छे, किंतु हमर लिमिट रो को फार्मूला थिला कोन, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x is equal to 1. तो एठारे sin डेल्टा x by डेल्टा x लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 अच्छे, तो एति की 1 हे गला, तो बाकी रहला तो लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y by डेल्टा x होची dy by dx. तो dy by dx is equal to limit delta x tends to 0 sin delta x by delta x into limit delta x tends to 0 1 by cos x plus delta x into cos x is equal to limit delta x tends to 0 sin delta x by delta x. हमारा फॉर्मूला 1 हे गला, तो दिस मच इज 1. तो एठी लिमिट उठे देले हमें डेल्टा x जगह 0 पुट करबा, तो cos x plus delta x 0 x plus 0 cos x, तो 1 by into 1 by cos x into cos x, तो 1 by cos square x is equal to sec squared x. तो dy by dx of tan x is equal to sec squared x. तो प्रूव करिया, प्रूव dy by dx of cot x is equal to minus cosec square x. तो y is equal to cot x, तो y plus delta y is equal to cot x plus delta x. Delta y is equal to cot x plus delta x minus y is equal to cot x, तो minus cot x. तो cot x is equal to cos x by sin x. तो cot x plus delta x जगह लिख परिवा delta y is equal to cos x plus delta x by sin x plus delta x minus cos x by sin x. तो सबट्रैक्ट कला परे हमको एलसीएम आर प्रोडक्ट मिलियो एवं sin x cos x plus delta x सहित मल्टीप्लाई हे जो एवं sin x plus delta x cos x सहित मल्टीप्लाई हो, तो डेल्टा y is equal to sin x into cos x plus delta x minus sin x plus delta x into cos x whole divided by sin x plus delta x into sin x. तमरो अगेन फॉर्म को आसीगला sin a cos b minus sin b cos a is equal to sin a minus b. तो a होची हमर एठारे x एवं b होची x plus delta x, कारण sin x होची एठारे sin x into cos x plus delta x. तो a होची x, b होची x plus delta x, तो delta y is equal to sin a होची x, तो x minus delta x minus x whole divided by
sin x plus delta x into sin x. The x minus delta x plus x, तो ब्रैकेट उठाइले x minus delta x minus x हो. Similarly x minus delta x minus x, तो x cancel ହେଇଗଲା, ରହିଲା sin minus delta x, तो sin minus theta is equal to minus sin theta, केवल cos minus theta is equal to cos theta. Trigonometric formulas. The delta y is equal to minus sin delta x divided by sin x plus delta x into sin x. तो हमको dy by dx बार करियर अछि, तो both side रे limit एवं delta x, the limit delta x tends to 0, delta y by delta x is equal to limit delta x tends to 0 minus sin delta x divided by delta x into 1 by sin x plus delta x into sin x. The dy by dx is equal to the limit delta x tends to 0, delta y by delta x is equal to dy by dx. The dy by dx is equal to limit delta x tends to 0 minus को हमें बाहर को नहीं आसवा, तो माइनस limit delta x tends to 0 sin delta x by delta x into limit delta x tends to 0 1 by sin x plus delta x into sin x. So that implies dy by dx is equal to, चलो हमारे पास फॉर्मूला फॉर्म को ऐसे वाला limit x tends to 0 sin x by x is equal to 1, so this much is equal to 1 into minus the minus 1 into limit delta x tends to 0, तो sin x plus delta x, तो delta x अगर है लिमिट उठा दे delta x अगर 0 पुट करिए तो x plus 0 is x, तो sin x into sin x, तो minus 1 into 1 by sin x into sin x. That implies dy by dx is equal to minus 1 by sin square x is equal to minus cosec square x. So finally we got dy dx of cot x is equal to minus cosec square x.